وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق الله خالقنا العظيم फिर जब तुम और तुम्हारे साथी अपनी अपनी सवारी पर बैठ जाओ तो कहो कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें जुल्मतों से नजात अता फरमाई। और फिर अर्ज करो कि ए मेरे रब मुझे बेहतरीन बरकत वाली ज़मीन पर ले जा और तू सबसे बेहतर जगह अता फरमाने वाला है। बेशक इसमें ज़रूर निशानियां हैं और बेशक हम ज़रूर आजमाए जाने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, ओके। I welcome medical research and advice for Ballot Honorable members in Ballot DHA and my dear residents. Today is an auspicious occasion because we are reaching another milestone today. And today we are fulfilling one of our promises of giving possession of plots to members in one's of homes. A brief update of where we stand today. Next. This statement is the vision that we carved out some time back. Establishing and maintaining a serene, secure, self-contained, self-sustained, quality housing system. I will touch on each one of these aspects. 2 years back, none of our enclaves were fenced or walled, and this area was open to wild animals, cattle, and thieves and burglars. Alhamdulillah, for the last 2 years, we have been able to fence each of our enclaves with security cameras installed, with round-the-clock observation of all the periphery. Besides, we have introduced a system of QRF which works at night also. We patrol all the streets, all the houses, and many times, because of our vigilance, very serious accidents have been averted. Serene, those who are here for the last 2 years must have witnessed of how we are trying to bring up a kind of horticulture here, which has a particular theme for the streets, for the roads, and for the colonies. So we are multiple kinds of flowers and trees which will give us round the year green look and round the year flowers to benefit and enjoy. Self-contained was another very big challenge. Because of its location, having more fun, many people were not ready to shift here because the basic facilities were lacking. And to speak the biggest one was a quality education institution. Last year, 16th August, with the kind patronage of Major General Mir Sultan, we were able to establish a Montessori, a junior school, and a daycare, which is a kind of its own. And we tried to affiliate it
with Army Public School and Systems. Recently, their regional director visited us and he was happily surprised to see the kind of teachers we have and to see the kind of facilities that we have come up with. Briefly, I must tell you that none of my teachers is less than masters. Some are even UET qualified engineers. The lady wives were free here. We requested them to spare their time for the children, and I can boast about this fact that my faculty of APS compares to none other in any other APSs. And Alhamdulillah, this actually, the quality of teachers promises the quality of students that we can come up with. Self-sustained was another big challenge because there is a growing gap between what we spend and what we get. For even minor shoppings, the people have to go to the nearest town, which is Islamabad. So today, this morning, it's a surprise, it's a good news that our plaza has been commissioned and inaugurated by Honorable President Middle East Officer. So this plaza that we have just inaugurated today, inshallah, we are trying to host a student which has promised to establish its full-time branch with lockers. I requested them especially for lockers and ATM because these are small houses which by design are not walled, and precious belongings of the people when they go for leaves or vacations need to be secured. So I requested a state bank that they, when open a branch here, they need to give us lockers. So those lockers we will give to our residents who all open their accounts here. And for the convenience of our residents, we are also trying to shift submission of maintenance charges from UBL to a bank. Same goes for the school fees of APS. So, right here, right in front of your door, we will have an ASCII bank where we can deposit our maintenance funds, the fees and charges and school fees. So, there is still a long gap between the expenditure as sustained, especially, I will not touch on this fact in detail because subsequent speakers will take on the subject of water and electricity, which again, probably many will not know that we are paying commercial charges for each household, whereas we charge you for domestic consumption. So this gap again is being made up by a company. So we are grateful to the graciousness of JVMC, kind courtesy of General Resourcer, that he has given he has a very kind heart, and that is why, honestly, this is only how I can sustain DHA Homes. In times to come, I am very hopeful that with more number of households added here, the kind of maintenance charges we get, inshallah, we will be able to sustain at our own. Just give you a next. This, is a historical perspective. Where we started. 2017 was the ballot held of 1,200 homes to finish maybe by 1 year's time, but because of multiple reasons. And the biggest reason was lack of flow of funds. We suffered a lot. And today, despite all those problems, where we stand today, next slide. Next. This is where we stand. If you see on the bottom, 920 houses or homes have already been completed. And we are just left with 18 in grey and 316 in finishing, which I hope by middle of March, inshallah, this liability of homes shall be done away with. And all the homes which were promised in 2008
will be delivered to the people. Now, this was one part of the challenge. The other part of the challenge was 893 members who were yet to be balloted and given homes. Next slide. So here, we offered because of the simple reason. We didn't have money enough to make those houses. So we kind of devised a way which was a win-win situation for both. We gave them a plot for 28 lakh rupees, 8 marla plot, and returned the rest of the money. And this 28 lakh plot, which we gave them with possession, by the way, is sellable in the market for not less than 8 million. So, by this out-of-box kind of solution, today we stand at 189 refunded, 555 balloted, and the total liability left is 149 out of 893 people who are yet to be balloted. And this 149, by the way, are the people who we are constantly trying to contact with. But for some reason, they are away, they have lost hope, and they have changed their numbers. So we are trying to spread out this word to them by any way that please come back to us and give us an option. If you give us an option for a plot, inshallah, in months' time, we will be able to deliver them these 149 plots. So by March, what I foresee that by March, inshallah, Allah willing, we will be done away with this liability of constructing homes and liability of giving plots to the people in lieu of homes. Today, ladies and gentlemen, we are stepping into another milestone, which is the 7th ballot for these 59 lotteries. And is that right? This is the dream of 5 and 8 marla plots, and today we stand at the 7th ballot of 59 plots. So this again actually, we started with a practice that when we do something, people will be convinced and get back to us. So we started with as many people who give option of plot, we will ballot them. And as of now, 59 people have given a choice in last 2 months, and here we are today giving them plots in possession. And I promised them, I had number of plots available in the valley, but I was very adamant on this point that these are the people who have suffered the most, and they must get plots adjacent to the homes. Plots which are readily available for construction of homes with all the services completed. So each one of the plots that you get today, you will find it is in the midst of already established colonies. So these are the new plots that we have carved out for you people, and inshallah you people will come back to me and you will be happy to know and see when you visit these plots yourself. Next. Here if you see, like I told you before, all these 59 plots are within the community of Lily and Oleander established sectors. This is one part. I must also make mention of 2 more things which are coming up in the near future. One is a children park. Many people came to me, they said that we don't have a recreational place for the children. So those who live in B sector would witness that new rides have come up. In 15 days' time, I am in the process of establishing an international-sized basketball court, a badminton court, and a cemented pitch for cricket. So this is one part where children can at least go and relax. We have also started something new, which at least as of now, no other DHA can boast of. And that is establishment of a saddle riding club. You people will be amazed to know
that we in this very humble abode are starting our riding club where 2 horses have already landed and 2 more are on their way. So I plan to teach these little kids how to ride. Basically, riding is not a sport. It is challenging a beast which is very powerful and hates being mounted. So these children who grow up in homes will study in APS and will be bold enough to ride a wild beast. So I want this kind of atmosphere brought up in this little area, this little humble abode of DHA Homes. There are many more things which I don't want to steal thunder from the rest of the speakers. And without much ado, I will request Major General Naveed Safdar to please come and apprise the House of what is in the offing in the next few months. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Respectable members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. The great Istikhar has given you a very elaborate briefing on DHA Homes. While I'm standing here, I can just say, let me talk to the people. ऐसे में करने आप थोड़ा सही कर दें. While I'm standing here, I won't say I'm fully satisfied, but Alhamdulillah, with the blessing of Allah Almighty, the decisions that I took in October 2020 and then subsequently 2021, some relief to the members has been given. My whole purpose of serving here as a general officer is to provide maximum relief to the poor effectors. That's the only objective that I have. Otherwise, it's not easy to face the effects because they are suffering since 2008, and it's very unfortunate. So I decided that we have to give them some compensation in some form, and that's how I've been taking decisions. I've been taking very bold decisions. Some of you might not be fully satisfied, yet you are being given sufficient dividend on your investment, which is in terms of 7 times and 8 times. So that's the whole purpose of this exercise that's going on. Out of approximately 2,200 DHA home factories, when I took over, there were only 270 houses complete. The rest were just the columns standing. It was a haunting place. Alhamdulillah, we just left with around 250 houses. They are in the completion stage, and within the next 2 months or so, those people would be given the possession, inshallah. So with other options that were given to the members, Alhamdulillah, we are left with only 149 people. And these are 149 people are the ones who actually are not in contact with us. And I have already tasked my customer support to please
go to the Nadra, find out their farm day, their family tree, contact each and every legal head, so that the legal heirs are benefited. No one is left, that's our moral obligation, to take care of each and every member. We must not leave even one individual, खुदा न खासकर जिसकी अल्लाह न करे डेथ हो गई है, but his legal heirs must be benefited. So that's the whole purpose of this exercise. So DHA Home today stands at over 95% completion. Taking this opportunity, I would also tell you that with regards to, there were actually 4 projects. One is expressway. Expressway, alhamdulillah, all holes are clear and 100% the project has been completed. With regards to DHA Phase 6, the previously it used to be known as Phase 2 extension, people used to call it tension. Not extension, attention. Alhamdulillah, there were around between 7,000 to 8,000 people were effectors, individual effectors. So all plots are there on ground for all those people. So 100% with me, 100% individual effectees addressed with regards to Phase 2 extension or DHA Phase 6. Remaining are the block files, around 3,000, 4,000. Those were pledged to the land providers. So they did not provide the land, so their files were blocked by DHA. And I think very right decision. So we can very proudly say that Phase 2 extension is also complete. With regards to development, would take its own time. It is one of, sometimes it is fast, sometimes it gets slow because of the non-flow of the money. But anyway, when we are starting, inshallah, it will be completed. I'll talk about it with regards to generation of funds little towards later in my speech. With regards to Valley, we have on the commercial side, 70% commercial physically are there on ground, and around over 600, 700 are fully developed, ready to be constructed. So more than 1,800, 1,900 commercials balloting head, 70% commercial balloting head. We are left with only 30%. Land is being acquired, and I'll talk about this also later. On the residential side, 45% people have been given plots on ground. Inshallah, remaining would also be clear. It's a little difficult. So please, one, cooperate. अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे मैनेजमेंट के साथ, मैंने पहले भी एक दफा कहा था, I'll take out this management and you handle your own affairs. We are there only to develop this society. We are not here to serve you for a very long time. Societies are run and administered by the people themselves. And people by themselves have to be very disciplined. They should be contributing together to get the best facilities. If you want to enjoy the 5-star facilities or the facilities that is barrier providing,
Just look at other societies of the area. They are charging over 6,000 rupees per house. But then the facilities are also extremely good. So if you want to avail those kind of facilities, you have to pay for it. Don't expect that this DHA is going to pay for your comfort from their own pocket. Sorry, gentlemen, this cannot happen. And this will not happen. This is a very clear message I'm giving it to all of you. We have to be, responsible members of this DHA home society. It is your DHA home. When you people build it as a community, घर तो बन जाता है, गांव तो बन जाता है, कम्युनिटी नहीं बनती। कम्युनिटी कैसे बनती है? कम्युनिटी के बायलॉज होते हैं, कम्युनिटी के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने आसपास का एक माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें लड़ाइयां ना हो, जिसमें झगड़े ना हो, जिसमें चोरियां ना हो, जिसमें एक दूसरे की जो है उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, ऊंचे ऊंचे म्यूजिक ना लगे हो, गलत किस्म की पार्टियां ना हो रही हो, गलत किस्म के लोग ना रह रहे हो। हम खुद एक बचपन में ऐसी सोसाइटीज में रहे हैं कि जहां हमारे बुजुर्ग जो होते थे, they used to be the one taking care of these bylaws. वो पता ही नहीं था कि निजाम कैसे चलता है। तो निजाम के स्टेक होल्डर आप लोग हैं, आप लोगों ने इसको चलाना है। तो हमने जो यहाँ पर मैनेजमेंट रखी हुई है ये आपके लिए रखी हुई है। At the moment I am paying from my pocket for this management. Pocket management means from the DHA जो भी मेरे पास जो इधर फंड्स आ रहे हैं वैली में, उसके पैसों से मैं तनख्वाही दे रहा हूँ 130 बंदों को। उसके बाद पानी यहाँ नहीं है, उसके भी पैसे दिए जा रहे हैं और अपना आप सोचो कि नहीं क्रिएट करते हैं। रिमेंबर, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। यार दिस इज अ सेफ just hear it from the people that it is doing very well. School is most critical. अपने बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन देंगे तो हमारी अगली जनरेशन बनेगी। हम अपने बच्चों को अच्छा कम्युनिटी में माहौल देंगे तो हमारी ये अगली जनरेशन बनेगी। मैंने और आप यहाँ पर मेरी तरह के चंद एक बुजुर्ग बैठे हुए, हमारा वक्त गुजर गया, पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। हम पूरे बैठ के पाकिस्तान की इंटरनेशनल सियासत पे रात को बैठ के डिस्कशन कर रहे होते,
खुदारा अपने बच्चों की फिक्र करें, अपने बच्चों की फिक्र करें कि आप एज अ फादर एंड अ मदर अपने बच्चे को क्या देके जा रहे हैं। हम उनके सामने झूठ बोलते हैं, और यार ये मोबाइल आया, फोन आया, 50,000 मैं कोई। द किड इज लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग यू। So if you lie today, if you fight today, he is going to do the same. Because he has been brought up in that culture, in that environment, which is full of corruption, which is full of lies, which is full of indisciplined people. It's unfortunate. What kind of generation, we are going to upbring in the coming years, or be a part of the same generation. You can see the situation. So first of all, concentrate on your home. I am concentrating on bigger things. I am providing you the best of the best facilities. School, inshallah, will provide you the best facilities. We have created recreational activity. We have created, polo and sandal club. But these are just facilities. Remember, the basic institution of the grooming is the parents. तालीम तो स्कूल में दी जाती है, तरबियत नहीं होती। तरबियत माँ बाप करते हैं। तरबियत और फिर वो जो एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है सोसाइटी का, उसमें बच्चा जो है वो अपना वैल्यू सीखता है। उसी सिलसिले में मैं आज एक चीज और अनाउंस कर रहा हूँ। चाहे जो दूसरी सोसाइटीज मैंने डेवलप की है, वहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था 11th पीरियड का। 11th पीरियड 8 पीरियड होते हैं। मैंने इसमें लाहौर के और बाकी शोधा के जो फ्लैट्स बनाए हैं वहां पर जाकर देखे, तो इवनिंग में मैं इस स्कूल को करना चाह रहा हूं कि जो वॉलंटियर बच्चे आए, हम वॉलंटियर पेरेंट्स जो रोल मॉडल हमारे लोग हैं उनको बुलाएं। वो आगे इन्हें कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, दीन और मदद के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, पाकिस्तानियत के ऊपर आके इन्हें लेक्चर दें इन बच्चों को, ताकि हम इनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। तो मैं ये अनाउंस कर रहा हूं आज, और बड़े इफ्तिखार आलम से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप 11th पीरियड आप स्टार्ट करें, और वो 11th पीरियड जो है वो उस स्कूल में चलेगा। और वहीं पर हमारे पास क्योंकि बड़े हॉल हैं, वहीं पर लेडीज का कम्युनिटी सेंटर डेवलप करें। लेडीज कम्युनिटी सेंटर इज इंपॉर्टेंट। हम अगर अपनी ये बच्चियों को जो आगे फ्यूचर की मदद है, इनको हम नहीं सिखाएंगे आदाब इस्लाम के बारे में, उनके जो लेडीज के अपने इश्यूज होते हैं उनके बारे में, उनकी कोई सिलाई कढ़ाई, उनकी ग्रूमिंग, बातचीत के बारे में, तो लेडीज जो यहाँ पर पढ़ी लिखी है उन्हें बताएं, वो वॉलंटियर होकर हम इस तरह के कम्युनिटी हॉल के अंदर एक पूरे, मेरे पास कंप्लीट विजन है, मैं ये काम पहले से कर रहा हूँ बाकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। यहां पर भी अभी मैं चाहता हूं कि अब स्टेज आ गई है कि हम एक 11th पीरियड भी स्टार्ट करें, और दूसरा हम यहाँ पर लेडीज के लिए एक कम्युनिटी सेंटर एस्टेब्लिश करें। इट्स नॉट फॉर द बिजनेस, इट इज फॉर द ग्रूमिंग ऑफ बच्चियों की ग्रूमिंग के लिए, ताकि कल को बेहतर मदद बन सके। उनके अपने मेडिकल इश्यूज होते हैं, उनके अपने और इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर बातचीत हो सके, हाइजीन के ऊपर बातचीत हो सके। इस किस्म के सब्जेक्ट्स जो है वो स्कूल में सर शामिल किए जाए, एंड वी कैन रन दिस प्रोग्राम इन द इवनिंग, एंड आई एक्सपेक्ट दिस वुड बी डन इमीडिएटली। फिर उसके बाद जो स्पोर्ट्स हैं उसके यहाँ पर सर थोड़ी सी कोई प्रोफेशनल एकेडमीज बनाए, क्रिकेट की एकेडमी बनाए, और चंद एक और ऐसी एकेडमीज बनाए। आई हैव अ पैशन फॉर क्रिकेट, तो आई थिंक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्रिकेट के, ताकि वहां पर बच्चों को स्किल्स दे। जो बच्चा बाहर नहीं निकलता, खेलता नहीं है, याद रखें वो अगर मोबाइल में बैठा है 24 घंटे, ये मोबाइल बड़ी बीमारी लगती है, ये तबाह करने
रही है हमारी जनरेशन, इनको बाहर निकालें, ये शाम को खेलें, खेल के आएंगे तो जल्दी थक के सोएंगे, आपके लिए भी आसानी रहेगी। क्या क्या ऐसा होना चाहिए। देखिए बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो पेरेंट्स को करनी चाहिए, इन मोबाइलों से जान छुड़ाए। नाउ कमिंग ओवर टू सम बिगर थिंग्स। आप कह रहे हैं ये क्या बातचीत कर रहा है, ये क्या हमें डांट रहा है। डांटने का, हम जिस एज के हिस्से में चले गए हैं, we can only pass on our experiences based on our learning. And we in the middle bracket or the middle age, we have to play this role. वो भी शाम उधर बैठा हो, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा होता है और इमरान खान है और they should take pride in those kids. Pride ही नहीं है हमारे टीचर्स के अंदर भी. It is one into नौकरी unfortunately. No, okay, I am saying over to the. It's a very hot and very burning and very sensitive and touchy topic with me with regards to growing of the young kids. But I leave it aside now. Switching over to some of the real issues of this DHA homes. This DHA home has a serious issue of water. Since last 6 months, we were undertaking a study because मुझे नहीं पता ये DHA डैम कब बनेगा। 2 साल तो मुझे हो गए यहाँ पर, 2.25 साल। और अब तक जो है DHA डैम का वो जो एक केस है कोर्ट में, उसका भी फैसला नहीं आया। और जो वहां पर लोग हैं, ना वो शिफ्ट हुए, ना उनको कंपनसेशन मिली है टू दोज पुअर पीपल्स। तो कब बनेगा DHA डैम, कब यहाँ पर पानी आएगा, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता डिले। क्या हमारा काम, अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि हमारा काम बड़े चीजों को देखना है। मेरा काम एज अ बॉस क्या है कि मैं आपको वो चीजें दे सकूं which are basically the necessities of the life. Water is a major issue. हमने 1200 घर बना दिए और पानी नहीं। आज हम 300-400 घरों का पानी पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए millions of rupees per month are being spent from the funds of the valley, जिससे एक्चुअली हमें जमीनें लेनी चाहिए, प्लॉट डेवलपमेंट करनी चाहिए, और वो इधर लोगों को पानी देने में खर्च हो रहे हैं। तो we decided कि ओरिएंटल में we will go for a dam. We asked various designers to develop the designs. उसमें नेफार भी थी, डिजाइन भी थे, और भी बाकी सारे लोग थे। वो स्टडीज जो है वो सारी कंप्लीट होने के बाद डिजाइन को आई हैव अवॉर्डेड देम अ कंसल्टेंसी, और ये जो प्रोजेक्ट है तकरीबन 1 बिलियन का, which I'm going to inshallah, if Allah willing, so complete it in around 7 to 8 months. Maybe it can go up to 1 year maximum, but मेरा प्रोग्राम जून तक ही है कि बारिशों से पहले हमारे मेन स्ट्रक्चर बन चुके हैं। तो वो डैम जो है, यहाँ पर जितने ये घर बने हैं और जो अभी घर और बनने हैं, उनको ये सफिशिएंट पानी दे सकेगा। खासतौर पे वो ड्राउट पीरियड जो आता है ना 3 महीने का, और उसके लिए
रहती है। जब हम इससे निकलेंगे तो वी हैव अनदर डैम और स्मॉल डैम्स, ठीक है, ताकि यहाँ पर लाइफ विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल। तो इंशाल्लाह ये डैम जो है it will come up very soon. Till then you will have no problems. Next is कि काफी सारे मेंबर्स 5 मरले के, ये कोई 1 साल पुरानी भी बात है, जो कि ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि take on the first floor. Alhamdulillah, those studies have been completed. और उसके जो फसाड है वो अभी आपको डायरेक्टर डेवलपमेंट जो है ब्रिगेडियर आसिम will show you. I have formally allowed people to start constructing 5 मरला के ऊपर जो अपना करना चाहते हैं वो अपने घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो दिस कैन स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल. इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इंश्योर कर, विच डायरेक्टर डेवलपमेंट वुड इंशाल्लाह इंश्योर. वन इज द BOQs, designs, drawings that would remain the property of Valley office. और यहाँ पर हम एक अपना प्रॉपर मैंने कह दिया जो आज कमर्शियल है वहां पर एक बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाते हैं, ताकि एक तरफ जो डिजाइन और ड्राइंग्स हैं और फिसाड है इट इज टू बी इंश्योर्ड बाय अस, सो दैट अल्लाह न करे कल को कुछ और गड़बड़ ना हो जाए. बिकॉज याद रखें ये वो गांव का नहीं है कि कमरे जो थे कमरा चढ़ा देता, ऐसे नहीं हो सकता. अल्लाह न करे कल को, जब मेरी जो सबसे बड़ी फिक्र थी कि अगर अर्थक्वेक आ जाए तो फिर क्या होगा, तो वो तमाम चीजों को इंश्योर करके, तमाम स्टडीज कंप्लीट करके, वेरियस आर्किटेक्ट्स के जरिए उनकी कंसल्टेंसी लेके हम इस जगह पर पहुंचे कि टुडे वी हैव अलाउड यू टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, बट यू हैव टू गेट फॉर्मल परमिशन. जिस तरह एक प्रॉपर सिस्टम है, DHA के अंदर भी ये सिस्टम है, पोजेशन का एक सिस्टम है, एक परमिशन का एक सिस्टम है. उसके बाद यहाँ पर इसकी जो कंसल्टेंसी या आप कह लें इंस्पेक्शन रिजीम, उस इंस्पेक्शन को हम फॉलो करें. अब में कोई यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्टर है हायर करना है, सेल्फ बेसिस पे करना चाहते हैं आप करें, आपने जितने अपने पैसे बचाने हैं बचाएं, लेकिन जहां पर हमारा रोल है वो हम प्ले करेंगे. एंड वी विल नॉट लेट यू प्ले विद द बायलॉज, विद द फसाड. हमने 3-4 डिफरेंट डिजाइन बनाए, वो आपको प्रेजेंट करते हैं. सो देयर विल बी अ कंप्लीट डिपार्टमेंट हियर इन दिस लिली ब्लॉक टू फैसिलिटेट यू पीपल. ठीक है जी, उसका एक पूरा एक निज़ाम, एक सिस्टम बनेगा, जिस तरह एक तमाम एक प्रोफेशनल फर्म्स के अंदर, प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर सिस्टम इवॉल्व किए जाते हैं. तो वी हैव ऑलरेडी गॉन पास्ट दैट स्टेज. नेक्स्ट है कि जी यही पता है कि आप बाहर से जाएंगे तो आपको मटेरियल्स वगैरह की, तो मैंने कहा है अपने डायरेक्टर कॉट को और डायरेक्टर प्लांट्स को कि इधर ही यहाँ पर कोई एक ब्लॉक फैक्ट्री खड़ी कर दें, यहीं पर कोई अपना, ताकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन ना पड़े और यहीं से वो लोग अपने मार्केट्स की बनिस्बत अगर कुछ
एक तो उसकी यानी कि प्राइस की बात होती है, वो सस्ता मिल सके अगर लोग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहते तो लोग जहाँ से मर्जी लेना चाहते हैं ले। और दूसरा उसका है PSI आपने मेंटेन करनी थी, उसकी एक सर्टन कॉम्पैक्टनेस, एक सर्टन उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो मेंटेन होनी चाहिए, वरना ब्लॉक नीचे गिरा तो टूट गया। वो भी चीज हम इंश्योर करेंगे, अगर आप ब्लॉक लेते हैं सिविल से, वी विल इंश्योर whatever you get it from the market, it is worth putting in your house because your safety and security is more important. But if you, let's say, those who are desirous to construct or start their houses, immediately please contact Brigadier Iftkhar और contact करके आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम मार्केट, और इफ यू थिंक कि हम आपको कोई रेफर कर दे, कोई बंदा, कोई कॉन्ट्रैक्टर, बट वी कांट टेक इट आवरसेल्फ, वी विल नॉट बी डूइंग इट। तो आप लोग जैसे करना चाहते हैं, हमने सिर्फ इसकी क्वालिटी इंश्योर करनी है आपकी सेफ्टी के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये एक दो बड़ी चीजें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। उसके बाद हमने तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो लोगों को हमने बैलेट करके घर दिए, हमने 250 हाउसेज की पोजीशन दे दी है। व्हिच इज दैट रिकॉर्ड? 250 हाउसेज की इन कॉलोनीज में, ओलियंडर में, लिली में, वो भी अपने 5 मरला 8 मरले के घर स्टार्ट करने हैं, उनके भी हमारे पास कंप्लीट BOQs डिजाइंस आर अवेलेबल एंड दीज पीपल कैन स्टार्ट देयर हाउसेस। और मैंने इनको ये कहा है पूरे ओलियंडर, पूरे अपना ये जो हमारा लिली ब्लॉक है, डैफोडिल है, इन तमाम जगहों पे आप कंस्ट्रक्शन खोल, इससे इंशाल्लाह एक मार्केट में भी स्टेबिलिटी आएगी डिस्पाइट द अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बट येट ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सिचुएशन इज आल्सो क्वाइट वर्स, बट स्टिल those people who are interested to construct their houses, they would be facilitated because we are getting into the next step. Next is last time I probably announced I have already given land to ये जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ये जो कि न्यूक्लियर वगैरह के साथ, और वो जो SPD के वो बड़े लोग जो कि डील करते हैं सिविलियंस, उनके लिए भी वो एक इदारा है CW, सिविल वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। हमने उन्हें यहाँ पर तकरीबन 70 कनाल दे दी है, उनको पोजेशन भी दे दी है, 30 कनाल्स हम उनको और दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके सामने डैफोडिल में ना सर, जी हाँ, डैफोडिल के अंदर we have given them the possession. So they are starting with the 11-story high-rise flats. They are starting immediately. So that would be another thing which would really इस पूरे एरिया की complexion को change करेगा। यहाँ पर फिर कमर्शियल और आएंगे, मैंने ऑलरेडी कहा कि कमर्शियल और खोले, और यहाँ पर चीज़ों को, बाकी फैसिलिटीज को लेकर, तो वो अपना फ्लैट्स शुरू होने लगे। और आफ्टर हमने कोई 200 कनाल हम हाउसिंग डायरेक्टरेट को जो है दे रहे हैं, तो उनके भी काफ़ी सारे यहाँ पर फ्लैट्स हैं, मे बी इन 2 to 3 years time, not in the near future, वो भी आएंगे। With this, thank you very much for very patient hearing. My best wishes and prayers to all of you. While leaving the rostrum, I just would tell this entire, all the members that I have once again started with a full pace of land acquisition and the development. I'm generating the funds that I said earlier. Phase ये DHA phase 6 में काफ़ी सारा कमर्शियल है जो कि अपनी हमारी DHA की प्रॉपर्टी थी. We are selling it in the market. Very soon they will, boards would be अपना it is the right time for investment. और वो पैसे से मैं लैंड ले रहा हूँ क्योंकि लैंड आएगी तो लोग इफेक्टिव क्लियर होंगे, डेवलपमेंट होती रहेगी. सो मैं इंशाल्लाह आई एम होपिंग, अल्लाह करे ऐसा हो इंशाल्लाह. थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है लेकिन मेरा अपना ज़ाती जो टारगेट है कि मैं तकरीबन फरवरी के एंड पे 4,000 to 5,000 प्लॉट्स की DHA वैली की बैलेटिंग इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं करूँगा.
और उसके बाद फिर मेरा जब टारगेट है जून का कि फिर मैं तकरीबन 5000 तक कर सकूं, इससे ज़्यादा कर सकूं, क्योंकि एक्चुअल जो इफेक्टिव हैं हमने 2008 के इफेक्टिव से शुरू किया था, तो 2008 के 29,000 तो इफेक्टिव हल हो गए, अब 16,000 रह गए। उन 16,000 इफेक्टिव को मेरी ख्वाहिश है कि मैं जितना अरसा यहाँ पर हूँ मैं पहले उन्हें एड्रेस कर दूँ। बाकी कोई ट्रांसफर वाले हैं, सेल परचेज वाले हैं, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल इफेक्टिव हैं दे आर आवर ऑब्लिगेशन, दे आर माय ऑब्लिगेशन, और मेरा दिन रात उसी के ऊपर है। अभी रिसेंटली मैंने निग्याल के एरिया में 2000 केनाल की हमारी डील्स मुकम्मल हो गई है एंड एरिया इज बीइंग डोज्ड, so that's why I'm today announcing on 2000 canal and some I'm trying to get the land elsewhere कि जी अपना हम 4 to 5,000 immediately in February will able to hold the balloting. Inshallah it will be done because 50% work has already been completed. इस पे एक और छोटी बात होगी कि आपका ये DHA होम की वो आखिर में जाके एक रोड की सिंगल हो जाती है ना, बाद में डबल है, उसके साथ वहां पर आपने देखा वो कंस्ट्रक्शन खड़ी हो गई है, वो उधर के जो 4 कनाल हैं हमने ले ली, उसकी डील फाइनल हो गई ऑलमोस्ट, तो ये रोड आपकी डबल हो जाएगी। With this, thank you very much. Let's pray. I pray for all of you. Please pray for me that I am taking once again a start with great motivation. I pray to Allah Almighty कि अल्लाह ताला हमें सबको कामयाब करे, अल्लाह हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने लिए भी दुआ करें, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह का शुक्र अदा किया। जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं वो ज़िंदगी में बहुत सुकून से रहते हैं। शुक्र अदा करें, रिज़्क़ हलाल खाएं और अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। आपकी प्रॉपर्टी ये 5 मरले 8 मरले प्लॉट नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं। सो इन्वेस्ट इन योर किड्स, दैट्स द ओनली मैसेज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. I'm Vivek Asim Suleiman, doing as Director Development and Technical in DHA Valley. As amply highlighted by Vice Chairman General Nabi Safdar, 2 fundamental issues that we are facing. One was creation of a small dam in Islamabad sector to cater for the water requirement, which is very cost prohibitive for DHA Valley. And second fundamental issue was the pressing requirement from the members to have delivered to them the plots instead of 5 marla single story houses. So I should first talk about the dam. Next please. I'm sure, gentlemen, you are all aware of the layout of this area. There are different sectors, but this small dam is being created, will be constructed in Oleander sector, and it is highlighted next to over here. It's a small dam, will cater for the requirement of the water in this area. As you can see, there's a nala tree originating from down there and goes towards Magnolia direction. So this nala is a perennial nala by nature, and this was in fact envisaged by the Great Pakhar and General Naveed. And since there was a sheer shortage of water, we were dependent on water bowsers, we were dependent on private hydrants. So after having seen the behavior of this nala, Vice Chairman decided to hire some renowned consultant to carry out the hydrological study of this area. Whether this nala, which has been identified by our management,
be able to meet our requirement or not. So taking lead from this, we hired a renowned consultant who carried out a hydrological study, and based on that, we appreciated that yes, this particular site can be built into a small dam to cater for the water requirement. After having done this step, next please. The issue as already highlighted, I shall go into a little more details to tell you the statistical data. As highlighted by Vice Chairman, that there will be 1,600 houses coming up near future in this area. And they are of 5 marla and 8 marla each. We have carried out multiple studies on deep boreholes and investigative studies to see whether the water is available or not. Unfortunately, it wasn't available. As highlighted, water is presently being supplied through private hydrant. और ये जो present arrangement है ये बहुत hefty है on the cost. जैसे वाइस चेयरमैन ने भी फरमाया कि ये हम millions of rupees per month खर्च कर रहे हैं to meet this water requirement for these houses, and which is not sustainable. तो इसको ओवरकम करने के लिए जो नाला तरील मैंने लास्ट टाइम दिखाया आपको प्रीवियस स्लाइड, उसको आइडेंटिफाई किया गया और हमने फिर बेस्ड ऑन दैट हाइड्रोलॉजिकल स्टडी वी हायर्ड engaged 3 renowned consultants, one from Lahore, one from Pindi, and one from Karachi. And we developed a competition between them based on that hydrological study, and we shortlisted, and our local consultant who will be now engaged for construction of this dam, inshallah. And the estimated cost of this project is around 1.1 or 2 billion rupees. And as highlighted by the Vice Chairman, it will be completed on a very fast-track basis. The completion time given by the consultant is about 1.5 years, but we shall try to complete it as early as possible. Next. ये हाइपर नहीं दिखा दीजिए. Gentlemen, this is the area, the catchment area which was studied by the renowned consultant. The highlighted area with yellow color is the catchment area, which is around 33 square kilometers. और नाला तरील जो है वो यहाँ पर नीचे से ओरिजिनेट होके सेंटर में जहाँ पे ब्लू पॉइंटर है वहाँ पे आके ये हमारा कैचमेंट एरिया बनता है, एक नेशनल रेजर्वॉयर बनता है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं फॉर अ स्मॉल डैम इंशाल्लाह. Next. This is all about the dam. Now coming over to the 5 marla houses and their facades. जैसे आपको ऑलरेडी हाईलाइट किया नवीन सफर में कि हमें अभी आप लोगों को हम हाउसेस की बजाय प्लॉट्स दे रहे हैं 5 marla. हमने इसमें भी काफ़ी एक्सरसाइज की एज ऑलरेडी हाईलाइटेड. हमने कंसल्टेंट्स हायर किए, आर्किटेक्ट्स हायर किए और हमने इन हाउस प्रेजेंटेशन हुई टू जनरल नवीद एंड वी फिगर्ड आउट, वी फाइनलाइज 3 ऑप्शंस टू बी गिवन टू द मेंबर्स so that they can select one of these options for construction of their houses. Next. मैं आपको आगे चल के ये दिखाऊंगा, बट द फंडामेंटल चीज इसमें देखने वाली वो ये है, वी विल मेक श्योर कि जो हम आपको एलिवेशन देंगे, साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, फसाड्स, ये इनसे आपकी डेविएशन नहीं कर सकेंगे. आप एक बायलॉज होंगे, एक टीम बनेगी, इस एरिया में बैठेगी, विच विल इंश्योर कि जो हमने डिज़ाइन फाइनलाइज किए हैं आप उनमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. यस, इनर डायमेंशन में आप प्ले कर सकते हैं. वी विल हैव 3 ऑप्शंस. लेआउट्स जो आपको पसंद हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं है तो आप इनर लेआउट में आप अपना डिज़ाइन लेके आ सकते हैं. बट फसाद जो है, जो हम 3 अभी आप दिखाएंगे आपको, इससे बाहर आपको जाने की इजाज़त नहीं है. नेक्स्ट.
दिस इज द 5 मरला एग्जिस्टिंग प्लान। आगे सब आपको पता है कि ये सिंगल स्टोरी है, 2 बेडरूम है, किचन है, लाउंज है और टोटल कवर एरिया अराउंड 1200 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट, और ये एग्जिस्टिंग फसाद है इसका विच आर प्रेजेंट ऑन ग्राउंड। नेक्स्ट, so option 1 for you. Next please. So this is the layout. काफी सोच विचार के बाद दिस इज द ऑप्शन 1 being presented to you. आप ये इसको अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें 2 बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे। माइक पे माइक को तो सामने रखना है। ये ग्राउंड फ्लोर होगा और राइट पे आपका फर्स्ट फ्लोर है। माइक पे इनके रिस्पेक्टिव जो एरियाज हैं स्क्वायर फीट, ग्राउंड फ्लोर कंप्राइज ऑफ 1056 स्क्वायर फीट एंड द फर्स्ट फ्लोर कंसिस्ट ऑफ उन्हें माइक चाहिए। 85 स्क्वायर फीट। ये काम कोर्ट है आपको आपके राइट साइड ग्राउंड फ्लोर पे एंटर होते हैं आप तो लाउंज है, लाउंज के साथ स्टेयरकेस है आपका, इधर एक बेडरूम कम ड्राइंग रूम हो सकता है आपका, किचन है, ऊपर एक बेडरूम है and then attached baths हैं दोनों bedrooms के साथ, and there is a small space here open to sky which will give you enough sufficient light and air circulation of this flat. Next, so this is the facade of that particular layout that we have finalized. तो अगर आपको ये layout पसंद हुआ, ये facade आपको अच्छा लगता है, more than welcome, you can adopt it, of course after having gone through certain processes जिसका approval हम लोग हैं। Next, so both are corner plot. Corner plot में साइड विंडोज हैं और जो नॉन कॉर्नर प्लॉट्स हैं जो कि मिडिल वाले हैं, इनका ऑलमोस्ट वही प्लान है। तो फसाद दिखा दीजिए। Next, so these are the नॉन कॉर्नर प्लॉट्स, वही फसाद है, सिर्फ उसको आप मिडिल हाउस करके दिखा दिया। नेक्स्ट, दिस इज ऑप्शन 2। इसमें हमने किया ये है कि लाउंज आपका ग्राउंड फ्लोर पे पहले राइट तक था, ये लेफ्ट पर आ गए हैं। दिस इज इंडिपेंडेंट स्टेयरकेस, पोर्च उसी जगह पर है, बेडरूम है, एक बेडरूम ऊपर की तरफ है, किचन लेफ्ट टॉप पे चला गया, ओपन स्पेस है और अटैच बाथ्स है। एंड सिमिलरली इसी का मिरर व्यू ऑन द फर्स्ट फ्लोर है। सो बाय डेवलपिंग डबल स्टोरी हाउस from 1000 square feet we are almost going to double, that is around 2000 square feet. 5 मरला। Next, तो ये दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास जो कि इस वक्त 8 मरला के हाउसेस इसी फसाड पे बन चुके हैं। तो अगर आपको 5 मरला हाउस को उसी फसाड में लेके आने हैं तो दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू, और इसका इंटरनल लेआउट मैंने आपको पहले दिखा दिया। नेक्स्ट, तो नॉन कॉर्नर में सिर्फ ये है कि जो विंडोज हैं एक तरफ वो नहीं है, बाकी लेआउट एग्जैक्टली इज द सेम। नेक्स्ट, तो दिस इज हाउ द सेकंड ऑप्शन जो कि रिजेंबल करती है 8 मरला हाउसेस से, जो आपको इस तरह नजर आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, तो लास्ट ऑप्शन जिसमें हमने सिर्फ लाउंज को चेंज किया, उसको प्रीवियस ऑप्शन में लाउंज ऑन द लेफ्ट साइड, नाउ लाउंज ऑन द राइट साइड with independent staircase, 2 bedrooms, kitchen on the right side, open to sky, attached baths, carports, and everything. और इसी का mirror is on the first floor. Next, तो ये है कॉर्नर प्लॉट का फसाद, इसमें आप साइड पे विंडोज ओपन देख रहे हैं। और नेक्स्ट, तो नॉन कॉर्नर का वही लेआउट है, सिर्फ विंडोज साइड पर नहीं है। नेक्स्ट, एंड दिस इज हाउ द थर्ड ऑप्शन ऑफ अ नॉन कॉर्नर प्लॉट विल लुक लाइक। नेक्स्ट, बैक टू ऑप्शन 1 2। आगे कैमरा आगे कैमरा कर इधर, कैमरा इधर कर। करे
इसमें अभी आप देखें कि ये जो ऑप्शन 1 है, इसमें आप अपने घर में 5 मरले में रह रहे हैं, यू आर नॉट डिस्टर्ब, यू आर नॉट चेंजिंग द लेआउट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। जो बाहर का उसका जो जूम आउट कर, आपका ओपन एरिया है घर के Zoom अंदर, out जहाँ कर। पर कि आपकी वो है Zoom out लॉन्ड्री कर। है, वहां से स्टेज ऊपर जा रही है। फ्लैट दिखाइए। प्लान दिखाएं, डोंट शो मी, आपको मुझे दिखाने का, और खुदा का वास्ता लाइन मतलब स्टेट बात करता है। ये देखे ना, अब स्टेज किधर से जा रही है, सो नो चेंज, द स्टेज आर गोइंग फ्रॉम लॉन्ड्री एरिया एंड अब आए उसके ऊपर वाले पोर्शन में, येट यू विल हैव सम ओपन एरिया, यानी कि इसमें भी हमने थोड़ा सा ओपन एरिया छोड़ा। तो ये वो ऑप्शन है जिसमें कि आप अपने घर में रहते हुए अपने ऊपर का फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन की सूरत में देयर इज अ मेजर चेंज। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाइए। देखिए इस ऑप्शन के अंदर नहीं ये ऑप्शन 2 है ना। जी सर। अब इसमें देखिए यहाँ किचन था, यहाँ से अब इधर स्टेयरकेस आया, तो स्टेयरकेस हैज कम इनसाइड। जब वो अंदर आया स्टेयरकेस तो फिर आपका एक ये मेजर चेंज है, और उसमें प्रोबेबली जो लोग इस वक्त घर के जो रह रहे हैं उनके लिए इस ऑप्शन को वे करना है कि ये कैसे इसको करवाएंगे। इफ दे कैन अफोर्ड इट दे कैन गो फॉर इट। हर ऑप्शंस का मेरा कहने का मकसद ये है, जब हम इसको स्टडी करते रहे, बड़ी कंप्रिहेंसिव 2 महीने से स्टडीज होती रही, कई प्रेजेंटेशन हुई, कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी कंफर्ट को देखना, फिर स्क्वायर फीट फर्क आ रहे हैं, आपने उसको भी देखना है। एवरी स्क्वायर फीट आपका कॉस्ट बढ़ जाती है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है, अपनी जेब को ध्यान में रखना है, अपनी कंफर्ट को ध्यान में रखना है। मैंने जहाँ बायलॉज की एक बात की थी वो इन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया। अब एक जो पूरी लेन है, आगे चले ना, कोई सिफारिश दिखाने ऑप्शन 2 का, आगे चलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बस यहाँ रोक दीजिए, गो बैक, पीछे रोक देना, पिछली स्लाइड यहाँ रोक। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू इंश्योर, अंदर आपने जो मर्जी करना है कर लें, ऑप्शन 1 पे जाना है, ऑप्शन 2 पे जाना है, ऑप्शन 3 पे जाना है। हम पूरी उस लेन का बाहर से फिसाट भी यही रखेंगे, हम फिसाट एक रखेंगे, हम ये नहीं होने देंगे आधा तीतर आधा बटेर, इसमें नॉट है, क्योंकि यहाँ पर 8 मरले के भी यहाँ पर घर है, तो उस 8 मरले के घरों की लेन में देन वी आर गोइंग टू हैव अ फसाड सिमिलर टू 8 मरलास। यू गॉट इट? इस चीज को ध्यान में रखना है कि ऐसा हो कि अंदर से जो मर्जी आपने करना है वो करें, लेकिन जो बाहर के फिसाड है वो हमारी एक डिजाइन और एक प्लानिंग के मुताबिक हम आपको डिक्टेट कर देंगे कि जी आप जो ऑप्शन अडॉप्ट करें, बाहर से आपका डिजाइन का ये होगा। तो हम हर जगह वो जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की जो एलिवेशन या उनके फिसाड हैं, अपने डिजाइन के मुताबिक उनको बाहर इम्प्लीमेंट करें, और जिन लोगों को प्लॉट मिले हुए वो अपना, उनके लिए भी हम एक सर्टेन रेंज के बाहर के फिसाड हम उनको दे देंगे। दे वांट टू स्टार्ट देयर कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली, प्लीज गेट बैक टू ब्रिगेडियर मुस्तफा आलम and he will facilitate you. If you want the blocks from us, you want anything else from us, we are here to facilitate. Thank you very much. और इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा होगा, तो वेलकम आपसे। थैंक यू सर। बैलेटिंग वाला जो खोल प्लीज कहीं मत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अली है और अभी मैं जो आज के बैलेटिंग प्रोसेस है उसको इनिशिएट करूँगा। इसलिए करें आपको इस जो सॉफ्टवेयर है बैलेटिंग का, ये DHA का अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें बैलेट से पहले हम मतलूबा नंबर जो हमारे पास प्लॉट्स होते हैं और जो मतलूबा हमारे मेंबर्स होते हैं उनको प्री फीड कर देते हैं। उसके बाद जब इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं
तो ये सॉफ्टवेयर रैंडमली प्लॉट्स को मेंबर्स के साथ उनके साइज के अकॉर्डिंगली पैच कर देता है और उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। वो रिजल्ट फिर उसके बाद जो बोर्ड बनता है वो यहीं पे उसको साइन करता है। यहाँ पे कुछ हमारे मीटिंग मेंबर्स हैं, उनसे हम साइन कराते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, और वो रिजल्ट फिर लॉक हो जाता है और वो DHA चला जाता है, वो वेबसाइट पे भी चढ़ जाता है और अकॉर्डिंगली मेंबर्स को भी हम यहाँ पे भी प्रिंट आउट दे देते हैं। फिर उनको हम फर्दर डिस्पैच भी कर देते हैं जो मेंबर आए ना हो। तो अभी जी सर, DHA की वेबसाइट पर भी ये शाम तक चढ़ जाता है ताकि आप वहाँ से भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक कर सकें। अभी मैं इस प्रोसेस की तरफ आता हूँ। तो आपको 4 खाने नजर आ रहे होंगे। मैं 4 मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रैंडमली खड़े होकर कोई से 4 डिजिट बोल दें, वो हम फीड करेंगे तो फिर हम प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। कोई मेंबर 4 डिजिट कोई रैंडम बोल दें कहेंगे। पहला है कि 1 2 3 4 नोट कर लेंगे। सेकंड नंबर 9286, दूसरा है कि 9286। आपका नाम क्या? मोहम्मद नहीं। थर्ड कोई और पार्टी सर? 1048 एहतशाम। 1962 पावर डार। तो अभी हम जैसे आपको ग्रीन बटन नजर आ रहा है स्टार्ट ड्रॉ का, उसको हम प्रेस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो आज का बैलेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज प्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह बैलेट प्रोसेस है स्टार्टेड। अगर आप बाएं नीचे देखेंगे तो आपको वो प्रोसेस भी दिखा रहा है, क्योंकि ये छोटा बैलेट है तो इंशाअल्लाह ताला सेकेंड्स में ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। 4 3 2 1। अल्हम्दुलिल्लाह बैलेट हैज बीन कंप्लीटेड। आप लोग चाय पियेंगे तब तक हम इसका प्रिंट करके और हम मेंबर से इसको साइन करवा लेंगे। और जाते हुए जो लोग आ चुके हैं और जो प्लॉट ओनर्स हैं कुछ नसीब, वो हमसे अपना रिजल्ट भी लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी काइंडली आप अगर अपने बाएं तरफ देखें तो चाय के स्टॉल्स हैं, चाय और हमारे से फिर बाद में प्रिंट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। घुमा ले। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि तमाम मेरे ख्याल से ऑफ कर लो। ऑफ करनी लाइव खत्म कर दो। हाँ 1 मिनट में पूछ लेता हूँ। पूछ लो कितने दिन चल